will let you do everything better than negative thinking will. With this positive thought, let's start today's session. Good morning to all the dignitaries, guests, and delegates with great joy and immense exaltation. I, Pratiti Kaiten, on behalf of the organizing team, feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for the webinar Positivity Unlimited, organized by Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi, in collaboration with Nirbagh. I'd like to introduce today's presenter, Gulshan Gupta, Northeast Coordinator, Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi. Lisa Hazarika, Psychologist and Spiritual Therapist. Rituparna, Library Educator. Anisha Kuwar, Counseling Psychologist and Therapist. Minanko Deka, Founder of Nirbagh. I'd also like to welcome our special guest, Kabita Bhattacharya and Rumjong Goswami, Retired Deputy Director, Social Welfare, Government of Assam, Retired Principal, Balabhavan, Guwahati. Corona মহামাৰীৰ প্ৰথম ঢৌৰ পিছত এইবাৰ দ্বিতীয় ঢৌ অৰ্থাৎ সেকেন্ড ৱেভ। এই মহামাৰীৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ সলনি কৰিব লগা হৈছে আমাৰ জীৱন যাত্ৰা। স্কুল, কলেজ বন্ধ হোৱাত আমাৰ শিশুসকলে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এক নতুন পৰিৱেশৰ। সলনি হৈছে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন সময়সূচী। অনলাইন ক্লাছ, টিভি, মোবাইল, ভিডিঅ' গেমতে ব্যস্ত। বেয়া সময় যদিও সময়খিনি আমি আগুৱাই যাবই লাগিব। পজিটিভ হৈ কেনেকৈ আগুৱাম এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে শিশুসকলৰ বাবে আজিৰ এই অনুষ্ঠান। So, let's start. First, I would like to request Gulshan Gupta to kindly enlighten our children to remain positive in this time. Sir. गुलशन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुलशन जी, So kindly unmute yourself. Gulshan, please unmute yourself. Gulshan, please unmute yourself. Now am I audible? Yes. Sir. Okay. নমস্কাৰ, মই অসমীয়া ভালকে ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু মোৰ মাতৃভাষা তো হিন্দী হয়, তো মই হিন্দীত কথা পাতিম। ओके, आज का जो टॉपिक है पॉजिटिविटी अनलिमिटेड। जब ये टॉपिक रखा गया तो बताया कि आज के जो समय है, पैंडेमिक का जो टाइम है, उसमें कितने लोग इस पैंडेमिक से दूर रहकर अपने माइंडसेट को दूर रखकर पॉजिटिव एस्पेक्ट में सोच सकते हैं। तो ध्यान में आया कि जो बच्चे हैं उनको जरूरी है ये बताना कि उनकी थिंकिंग डायरेक्शन क्या हो, वो किस दिशा में अपने को इस समय को लगाएं ताकि वो फ्यूचर के लिए सोच सकें, अभी के लिए नहीं। नेगेटिविटी में हम सोच करके कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते। यदि वो क्रिएटिव कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। तो पहले हमें ये जानना है कि हमें जो भी करना है वो कंस्ट्रक्टिव वे में करना है या कुछ डिस्ट्रक्टिव वे में करना है। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होगी, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव करेंगे। जो भी हम काम करेंगे वो कंस्ट्रक्टिव होगा, समाज के हित में होगा। ऐसा करने के लिए क्या करना है, तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि यदि बच्चों को या किसी को भी समझाना हो आसानी भाषा में, तो हम क्या सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी मतलब कैसे लेकर आए अपने अंदर। तो ये 3P का फॉर्मूला है, 3P, और उसमें से एक P हमारे वर्कशॉप का आज हिस्सा है, पॉजिटिविटी। तो पहला जो P है वो है पॉजिटिविटी। सेकंड P है हमारा परफॉर्मेंस, और थर्ड P है पंक्चुअलिटी।
आज मैं अपने जो छोटी सी मेरी बात है उसमें इन 3 पी के ऊपर फोकस करूंगा। पहला पी पॉजिटिविटी, ये कोई दूसरा नहीं लाके दे सकता हमको। हमें अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन से ही पॉजिटिविटी लानी है। हाँ, ये हो सकता है कि हम दूसरे को देख करके इंस्पायर हो जाएं, लेकिन यदि हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है तो सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा अपने आप को। वो पॉजिटिविटी हमें अपने अंदर से लानी होगी, तभी हम कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे, तभी हम कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे, अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी। यदि हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो दूसरी बात आती है परफॉर्मेंस की। कई लोग अच्छा सोच लेते हैं, उनके पास बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसे आइडियाज का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। आप पॉजिटिव हो, आपका एटीट्यूड बहुत हाई लेवल का है, आपके जो थॉट्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उसको आप जमीन पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो वो आइडिया किसी काम का नहीं है। तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि जो हमने सोचा, जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, उसको हम परफॉर्म करके दिखाएं, उसको हम लोगों को सामने ला करके दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। तो सेकंड चीज है हमारी परफॉर्मेंस। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ रहती है। यदि आज हम पैंडेमिक का टाइम देखें तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हमारे हर एक के आसपास, केवल किसी एक के आसपास ऐसा नहीं, हर एक, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो दिल्ली में है या असम में है, किसी भी एज ग्रुप का है, सबके साथ में कोई ना कोई घटना घट रही है, सभी इससे सफर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हम इस सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं? ये पॉइंट है। यदि हम पॉजिटिव कुछ देख सकते हैं तो बाकी समाज को, बाकी सोसाइटी में जो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, उनको इंस्पायर करने का काम हमने करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से। और तीसरा पॉइंट है इसमें पंक्चुअलिटी का। मान लीजिए आप पॉजिटिव हैं, आपने बहुत अच्छे आइडियाज सोच के रखे हैं, लेकिन आप जब जरूरत है तब परफॉर्म नहीं करते, उसका बाद में कोई मतलब नहीं है। आपको पंक्चुअल भी होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तभी होनी चाहिए जब उसकी जरूरत है। बाद में करा, 10 साल बाद किया, 2 साल के बाद किया, उसका मतलब नहीं रह जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस बनाए रखने के लिए उसके अंदर पंक्चुअलिटी जरूरी है। अब पंक्चुअलिटी में 2 चीजें शामिल होती हैं। हर काम को हम, जो भी काम है, या तो वो अर्जेंट होता है या इंपॉर्टेंट होता है। दोनों शब्दों का मतलब अलग है, सेम नहीं है। या तो अर्जेंट है कोई काम या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं, हमारे पास बहुत सारे काम होंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे प्रायोरिटी में, और हम ये तय करेंगे कि पहला कौन सा काम हमें करना है। लेकिन यदि उस पहले काम को करने में हमने देर कर दी, पंक्चुअलिटी नहीं दिखाई, टाइमिंग नहीं दिखाई, तो वो काम धीरे धीरे अर्जेंट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए हमारे पास टाइम होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जिसके लिए हमने प्लान किया है, जिसके लिए हमने योजना बनाई है, हमने सोचा है, उसको करने के बाद लिए हमारे पास टाइम भी है, और उस टाइम पीरियड में हम पूरा करते हैं। लेकिन उस टाइम पर हमने पूरा नहीं किया, जब उसकी जरूरत थी तब नहीं किया, तो वो अर्जेंट बन जाता है। और अर्जेंट काम को हमको बहुत जल्दी में करना पड़ता है, उसकी वैल्यू तब उतनी नहीं रहती है। हमको अर्जेंट में करने का मतलब ये हुआ कि कई सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी उस काम को करने के दौरान। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी परफॉर्मेंस को आप इंपॉर्टेंट बनाइए, अर्जेंट मत बनाइए। अर्जेंट के समय आप उसके अंदर की बहुत सारी बारीक बातें भूल जाएंगे, छोड़नी पड़ेंगी आपको। तो पहला पॉइंट है पॉजिटिविटी, दूसरा है हमारी परफॉर्मेंस, और तीसरा है पॉजिटिविटी और परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए पंक्चुअलिटी। ये 3 पी हमको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इस पैंडेमिक के समय में कितने लोगों ने अलग सोचने की कोशिश करी। आज समाज को जिस चीज की जरूरत है, क्या उस दिशा में हमने सोचने की कोशिश की? हम यदि मान लीजिए हम ठीक हैं, तो हमारे ठीक होने का फायदा केवल घर में, हम घर में बंद होकर के बहुत कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन यदि हम कुछ सोचें सोसाइटी में किस चीज की जरूरत है या फ्यूचर में क्या स्कोप है, किस दिशा में मैं अपने करियर को ले जा सकता हूँ, या सोसाइटी में जो जरूरत है उसको मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम आपके पास आता है और आप उसको कर भी सकते हैं, लेकिन केवल अपने को बचाने के चक्कर में या फिर मैं क्यों करूं दूसरा क्यों ना करे, इस होड़ में हम लोग अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। हमें उस होड़ से बचना है, इनिशिएटिव लेना है। इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी, आपके थॉट्स का कोई फायदा नहीं है। आप इनिशिएटिव लीजिए, आपके अंदर सुधार होता जाएगा, डेवलपमेंट होता जाएगा। पॉजिटिविटी तभी फायदेमंद है जब आप उसको परफॉर्म करना जानते हो, और इसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। लेकिन जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आप क्रिएटिव नहीं बन सकते। क्रिएटिविटी का मतलब है एक्सपीरियंस आना, और एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप फील्ड में उतरेंगे। तो मेरी गुजारिश है, आप पॉजिटिव बनिए, परफॉर्म करिए और पंक्चुअल बनिए। ये 3 P का मेरा एक फंडा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक लास्ट में छोटी सी बात और शेयर करूंगा, क्योंकि टाइम सबके पास कम है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं। एक छोटी सी बात और शेयर करूंगा, शायद हम लोगों को मोटिवेट करे। कई बार होता है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता या इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा होता, हमें कोई पुश करने वाला नहीं होता। तो हर बार कोई पुश करने के लिए नहीं आएगा। आपको एक बार कोई मोटिवेट कर सकता है, एक बार इंस्पायर कर सकता है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक आप खुद नहीं कुछ कर पाएंगे। तो कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जब नेचर हमको खुद इंस्पायर करता है। हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, नेचर ऐसी सर्कमस्टांसेस बना देता है, ऐसी सिचुएशंस बना देता है जब हमें खुद मोटिवेशन मिलने लगती है। मान लीजिए हम ईश्वर को मानते हैं या गॉड को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, तो हमारा एक टेस्ट लेता है भगवान या ईश्वर या गॉड, एक परीक्षा लेता है कि इसको जो मोटिवेशन मिला, नेचुरली जो इसको इंस्पिरेशन मिला, तो क्या ये अपने आप कुछ एक कदम बढ़ाता है उस डायरेक्शन में कि नहीं। तो जो ईश्वरीय जो नेचुरल पावर है या जो यहाँ ऊपर दैवीय थोड़ा वेट करती है कि इसको मैंने मोटिवेशन दिया, ये मोटिवेट हुआ भी, लेकिन क्या इसने अपना एक पहला कदम बढ़ाया, इसने कुछ करने का सोचा। यदि तब आप अपना पहला कदम बढ़ाते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो नेचुरल पावर जो आपकी मोटिवेशन थी ना, वो बनी रहेगी आपके लिए, वो आपको गाइडिंग फोर्स का काम करेगी। लेकिन जब आप उससे पीछे हट जाएंगे ना, या निराश हो जाएंगे या फिर शांत बैठ जाएंगे, उतनी मोटिवेशन होने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे, तो जो नेचुरल पावर थी ना, फिर वो अपना काम करना बंद कर देगी। वो गाइडिंग फोर्स जो थी वो खत्म हो जाएगी, वो फिर आपके पास नहीं रहेगी, वो किसी और के पास चली जाएगी, वो किसी और को मोटिवेट करेगी। मतलब ये कि कोई ना कोई तो रिसोर्स बनेगा, वो हम क्यों ना बने, क्या काम करना है सोचो। जब मेरे पास मौका आया तो मैं परफॉर्म क्यों ना करूं। इसलिए हमें ये तय करना चाहिए कि मैं यदि मोटिवेट कहीं से हो रहा हूं, मुझे कहीं से पॉजिटिविटी मिल रही है, कहीं से एनर्जी मिल रही है, तो मैं परफॉर्म करूं, और परफॉर्म करूं वो विद टाइमिंग करूं। ये 3 चीजें हम मिला लेंगे तो मुझे लगता है कि हम कोई भी थॉट, कोई भी आइडिया इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और सक्सेस भी मिलेगी। ये हमें मुझे लगता है आज की एक छोटी सी बात मैंने शेयर की, सबके लिए मेरे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने कामों को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ करूं, परफॉर्म करूं और पंक्चुअलिटी के साथ करूं। जो मैंने सीखा, जो मुझे अनुभव हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया, और बाद में यदि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें और भी बात करेंगे। लेकिन आगे के जो स्पीकर हैं उसके लिए मैं प्रतीति को बताता हूँ कि वो अपने अगले स्पीकर को बुलाएं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। Thank you so much, sir. This was really very motivating. Positivity is the key, and how to remain positive is something which we all need to learn about. So I request Lisa Hazarika to kindly address. Hello everyone, নমস্কাৰ সকলোকে।
মোৰ নাম লিজা হাজৰিকা. This is Liza Hajarika. I'm a psychologist and a spiritual therapist. আৰু I'm very, very happy to be a part of this beautiful webinar. আৰু বহুত ভাল লাগিছে তোমালোকে এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছা পজিটিভ থিংকিঙৰ ওপৰত। আৰু বিশেষকে আমাৰ যোনটো ইউথ আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ মাজত এইটো বস্তু প্লান্ট কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এনেকুৱা এটা টাইমত যোনটো আমি সকলোৱে পেণ্ডেমিকৰ লগত যুঁজি আছো, এনেকুৱা এটা চেঞ্জ এটা আহি আছে লাইফত। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই অসমীয়াত কওঁ নে ইংলিছত কওঁ নে হিন্দীত কওঁ, কোনটো ভাষাত ক'লে সকলোৰে সুবিধা হ'ব? Ma'am, English. ইংলিছ? Yes, ma'am. English. Ma'am, Okay, English. okay, I will try to use 3 of the languages. Fine. Okay, so it is Okay, very ma'am. important to plant positivity. First of all, I want to ask you guys, what is positivity according to you? I want fresh answers. Let's not waste time because there are already a lot of speakers. So anyone, there is no right or wrong answer. What is positivity to you? Ma'am, could I speak? Yes, please. Ma'am, it's a fresh and pure thinking, ma'am, to build up ourselves in a new way. Good. Anyone else? Okay. So, yes, please. And it is the source of motivating someone with some good ideas and some good thoughts rather than taking some negative thoughts. Yeah, sure. So today I want to introduce a very new concept, that is the importance of negativity in our life. How to be positive with negative emotions. I want to ask you people, will you be experiencing happiness when there is no sadness? If I tell you that there is only one color, that is black, will you be, will you know the other colors? If I show you only one color, that is black is on, okay, black is the only color that we have in this world, will you know that there are other colors, other beautiful colors also? Yes, ma'am. How we will get to know that there are other colors? If from birth to till the end of our life, if I have only seen the black color, it won't be possible to know other colors. If I have no idea that there is another color in this world, another beautiful colors. So what I'm trying to say here is that we need to experience happiness because we have negative emotions. Negative emotions are equally important in our life. If I have to list out few negative emotions, first, anger; second, guilt; third, sadness; fourth, feeling of jealousy, right? There are other more negative emotions. Why I'm telling you that negative emotions are important? Because when you will know that there is a sadness, when you will know that there is a problem, only then we will realize that we can be happy. Only then we will realize that we can find a solution, and that solution will give us the happiness. So staying positive doesn't always mean to not having any problems, to not facing difficulties in life, and obviously not that you are not experiencing negative emotions. It is very okay to experience negative emotions in our life, but the fact that when the time is prolonged, like for example, today I'm angry at someone for some reason, tomorrow I'm angry for the same reason, third day I'm angry for the same reason, that is when the negative emotions is impacting my life, and it is making me difficult to deal with the daily sources. Again, today I'm happy, tomorrow I'm happy, third day I'm happy, fourth day I will be happy. I'm happy, 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 happy. That is all happiness.
there will be a point when I will go blank because I have only seen happiness and there is no other emotions. So I won't be able to name that entire emotion as happiness. Like normal day. It's like, I'm normal, I'm good. And there is nothing there is. And at the same time, we don't realize the fact that no news is also a good news. So because we don't realize the fact that no news is also a good news, we have to experience a bit of bad news so that we know the importance of good news. I hope you are getting my point. We have to experience a bit of negative emotion so that we can realize the worth of positive emotions. Implementing positivity is again not a very easy thing, but at the same time, it's not at all tough. Sometimes we can be positive only by sitting and doing nothing and thinking about our own life, about the meaning of our life. Meaning becomes what we want to do in our life, how we want to do in our life, what are the resources we need to do or to accomplish that goal. When you sit and think these three things, you get a proper goal, you get a proper way to reach that goal, and you know what are the things you want to use to reach that goal. So that period, you're doing nothing, but you got the biggest thing in your life, that is the motivation, that is the meaning of your life. Um, Instead of discussing a lot about positive things, I want to say a few techniques that I apply in my life to create positivity in our daily basis. So I won't say that my life is so like sorted and I wake up with a smile. Sometimes I wake up, oh, I have to get to this client, I have to make this PPTs, I have to do this presentation, all jumbled up. But at the end of the day, I make sure that I go to sleep with some positive thoughts. And how I do that, I'll show you uh, this copy, the small copy. It helps me to remain positive. It helps me to go to bed with a smile. And the secret is, it's not a secret, but many of us, we practice it. I write all the good things that happened in the entire day. And when I say good thing, I doesn't only mean that I got money or someone appreciated me or I got good marks, but I also include things like I'm so grateful to my coffee, which made me feel so fresh today. Like I'm thanking my coffee. Counting your blessing is one of a very easy and very beautiful way to bring positivity in our life. At the end of the day, when I sit down and I feel that nothing good happened in my life today, but then I take out this copy, I take my pen, and I visit my day from the moment I woke up, and I try to count at least 5 things that happened good. So it's 11:30. If I talk about today, the first thing that happened that I woke up at time. I'm so grateful that my helper, she came uh, at 9 o'clock and she woke me up. And thanks to her, I'm grateful to her. Then I'm grateful that she made a very delicious breakfast for me. I'm very grateful to her. Again, I'm grateful to the cup of tea I had this morning, which made me feel so fresh. I found 3 things. So you can practice this before going to bed. Take a separate copy and call it your gratitude journal.
Write down at least 5 things, minimum 5, maximum how much you can find out. At least 5 things, and try to list out what are the good things that you are thankful about and that happened in the entire day. I'm thankful to my teacher who taught me this thing to do uh, in this manner. I'm thankful to my mom who taught me to cook this dish. I'm thankful to my friend who told me that I'm a good person, that I am a good friend to him or her. So before going to bed, at least try to find 5 things to write down which happened with you and which gave you a reason to smile. Okay. Another thing I do is planning. So before going to bed again, I plan my day. This was from yesterday. This was day before yesterday. And whenever I'm done with some work, like today after attending this webinar, I'm going to cut it here, 11th webinar. I'm going to cut it down. It gives me a sense of accomplishment that yes, I did something today. आज तो कुछ कर लिया मैंने. At least ये तो हो गया. But yes, at the same time, I will try not to demotivate myself by saying that by looking at the list and saying, अरे यार सिर्फ एक ही कर पाई. अरे यार सिर्फ 2 ही हो पाया मैं. I have to tell myself that today was tiring, but at least एक तो कर लिया, एक तो हो गया. Tomorrow I will try to do at least 3, and that keeps me going. That keeps me motivated. Another thing I do is meaning. So this copy is for myself to I keep it, to increase my vocabulary. Whenever I find a word, something which I don't know the meaning of, I try to Google it. I try to find the meaning of that word, and I write it down. It makes me feel good that okay, next time I'm going to use this word when I'm talking to someone. So जब भी कुछ ऐसा word मिले जो आपको नहीं पता उसका meaning, try to write it down, try to write the meaning of it, and make sure कि एक हफ्ते के अंदर अंदर किसी के साथ बात करते हुए वो उस word का आप use कर रहे हो. It will give you, a sense of creativity. And अगर कोई आपको पूछ लेता है ये जो तुमने word use किया इसका meaning क्या था, there will be a motivation inside your mind. Somewhere it will click. Yes, आपने किसी के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाई, आपने किसी को एक जानकारी दी, and that's a small accomplishment, but you never know what you're changing in someone else's life. So this 3 things that I practice, which I discussed with you. First, gratitude journal. Second, planning. I plan my day. Third, meaning. Another thing that I want to talk is that this period is very hard, and some of us have lost someone. Some of us have seen our friends losing someone, and it's a terrible feeling. I know how hard it is for every one of us. One thing that we have to keep in mind that we cannot lose hope. We cannot lose hope about our future. आप लोग का अभी जो टाइम है अनसर्टेनिटी में चल रहा है कि क्या होगा, एग्जाम हो गया कि नहीं, क्या पढ़े, ये पढ़े, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, कुछ समझ में नहीं आया. ऑनलाइन क्लासेस सबके लिए नया था, हम सबके लिए. इवन टीचर्स वेर स्ट्रगलिंग कि कैसे ले ऑनलाइन. इतने सालों से कभी ऑनलाइन कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने. So it was difficult for every one of us, right? But we have to keep one thing in our mind, that you guys are our future. अगर आज कंट्री
कहीं पे collapse हो रहा है, then we have a hope that you guys are going to rebuild our country again and take it to a height जहाँ से in future we won't be struggling. God forbid we won't be struggling with anything like this again. And I'm very, very, very happy that I got this platform to share my ideas with you all. And at the end, I'm sure we will be having a lot of questions. So I want to end here and thank you, everyone, for listening. I hope you are not sleeping right now. Bored नहीं हो गए तुम लोग और सोने गए. So okay, Pratiti, you can take it forward to the other speaker. So much মই নিজৰ সাথে try কৰিম at least তিনিখন বস্তু maintain কৰিবলৈ যে ময়ো কিবা এটা শিকো পাছালে. In today's world, a book should be the best friend of a child, but it's something very rare to see. I request Rituparna, library educator, to tell our tiny audience regarding something. Sir? Okay, yeah. Hello, good morning. Am I audible? So you are. Okay, thank you. Yes. So মই চাগে অসমীয়াতে কম কাৰণ বহুতখিনি আছে মাজে মাজে ইংলিছ আৰু হিন্দী ইউজ কৰিম that's not a problem. So thank you আগৰজন স্পিকাৰ ইমান খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি ক'লে নিজৰ লাইফৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট কৰাৰ লগতে প্ৰেক্টিছ ভংগীৰ পৰা ক'লে মই নিজেও পাৰ্চনেলি বহুত উপকৃত হ'লো. So yeah, Minankoy মোক ক'লে যে আমি পজিটিভিটিৰ ওপৰত কথা ক'ব লাগে. Sorry যে কিতাপৰ মানে Rituparna ji, there are lots of speakers who are outside from Assam, so जी मैक्सिमम हम लोग इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, है ना? नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे पहले लगा हाँ speak in English. ठीक है? Sure. Okay then, thank you. So I don't know to start, about books and also because I can say like how books have seen in surrounding to me. Now you can see, so you have me. There's so many books. There are so many books, and these books give me hopes and positivity ranked for sure because through books I try to pick up a book to speak about the topic. For example, if someone will invite me to talk about some environment or some gender justice or something like that, probably I pick up a children book where but the story is aligned to that and book gives the answer. So probably today also I will start in that way. Maybe I'll read a book for all of you, then we can talk about it. Okay. So I have so many books that I don't know which one to pick, but I got a book for all of you. Can you all see this? You can, if you can see, then you can give a thumbs up. Yeah. So I'll read this book for you, then maybe I will start talking about it. Because book speaks. किताबें बोलती है, तो पहले तो किताब को ही सुनते हैं ना, then उसके बाद हम लोग बातें करेंगे. So the book which I am going to read for all of it is a very small book and there is no story. Sir. Yes. Yes. Rumi Deka kiba কৈ আছে? Okay, maybe I missed the gap.
So there is no story such, but then there are some hidden messages within the book. So now I will read this book for all of you. A Book is a Bee. The book name is A Book is a Bee, and it's written by Lavanya Kartik, and pictures are by Rusi Shah. And this book is published by Tulika. And I found this book last year, and I was just touched by the book, what it says about book, and I could relate so much. So that's why I thought of to share with all of you. These books have so many colorful pictures, which you can see from here now. A Book is a Bee by Lavanya Kartik, and pictures by Rushi Shah. A book is a bee buzzing in your head with things to say. A book is a tree with branches to climb to see the world around. A book is an ocean, deep and exciting, mysterious and surprising. Aha! Book is an ocean. A book is a ship that sails you far away over waves of words. Can you see this? A book is a rain cloud that showers fresh stories it gathers from far and near. A book is a seed that sprouts new ideas. Really? Do you think so? Is there any book which you have read and you got some new idea? I have so many books I have read, from where I got new ideas. A book is a forest full of life and sounds and colors. Just like beautiful forest, just like this book also full of colors. A book is a mountain that you climb for the trail. Aha, we got trail from books, right? A book is a blanket that warms and comforts. A book is a feast, mouth watering, lips smacking, tummy tickling. Is it? A book is a friend, always by your side, through happy times and sad. A book is a mirror into which you look and shout, "Hey, that's me." A book is a bee. Did you like the story or the book? With colorful pictures and so many things which we can relate. One of the biggest thing from this book I can always relate is, I'll just show you. A book is a friend. A book is a friend always by your side through happy times and sad. So it's true. A book is always there with you, no matter you are happy or you are unhappy, you are sad or you are overwhelmed, anything. These books are with me for so many years, and I have seen so many things in this year. Sometimes I'm so happy, sometimes I am just going through a very good time, sometimes low time, and probably these days also we are going through a lot of problem. But then books are with me always. So I'll tell you, when I was in school, that time, maybe probably in high school, I was a bit lonely. I didn't have so many friends in my class, in my classmates. Like I could not make a lot of friends. Probably I was maybe introvert, or maybe I could not go around and play with my friends. So I couldn't make a lot of friends. I felt a bit lonely. But there's a beautiful library now. To this time, just escape from my loneliness. I was all alone. There was no friend to play with.
because they were busy playing. I couldn't find myself playing with them. So I used to go to the library just to sit quiet, so that nobody can disturb me. Because there's so many friends, like classmates, always seem to tease me for no reason. Without any reason, they used to tease me. So I wanted to escape from that. So I started going to library just to sit quiet. Then I picked up some books because I was sitting in the library. You just can't be sitting there, right? You have to do something. So I picked up a book. My God, what I got? I got new friend. The book. And as the book said, that book comforted me. That book helped me to cope up with my loneliness. I was not alone anymore. I got so many friends. As the character of the books, I started reading world classics, different stories from different parts of the world. Mark Twain, Oliver Travels, all these things, Robin Hood, so many, Jules Verne's book. Then I started getting uh, friends from there. I felt like, I was there in those area, in those places. I could not go to America, or maybe I could not go to England. I could not see Mississippi. I could not, till now, I have not seen Amazon. But when I was in school, I could feel that, I have seen them. I was there. I was in the wonderland of Alice because I read them. I got so many friends as this, character of the stories, the pictures. They started talking to me, and I started talking to them, and I started become expressive. I could start write also. So I started writing poem. I started writing short pieces. I started drawing, and I started sending it to newspaper or some children magazine like Mosa, Kopura, Naruna Biska, Rongmela, those magazine. And it started got published also. And I felt so happy. And I started getting new friends from different parts of Assam also. Because people started knowing me. So one thing I want to say, that no matter what, books will be there. And when I went to college or then further study also, library was always there with me, where I could just go and sit and just pick up a book, and I could travel to the world. I don't need to go by flight just to see a place. I could see ocean. I could see space. I could see desert. So it has, and with books you can make friends also, because you will meet other people who loves books, who talk about books. And they will, they will start, listening, they will start, and it happened. Then I can say that this will happen. And I'm thinking what book to, it can help us to think more. It can help us to ask more, question more. I have one Bible is so here. Why Bible is here? Why Bible is here? She has a lot of question. And then she become a teacher in her school. But then where she got her answer? In books. So we have to ask question. And sometimes we just need to read for fun. Like I have some books here. Okay, I'll show you. This book name is called Khichdi, and this is a Lok-katha, folk tale. And this is a funny story. This is a very funny story. And when I read this book, I laughed like anything. I laughed like anything. I felt so good just laughing because it's a funny story. So book is not uh, just to gain knowledge or something like that.
but it's just for fun also. Reading is so fun. Now, you may think that, my God, I have so many books from my school to study. Social science, science, mathematics, environmental science, like what not? So many books. And this bhaiya came and are telling me that, you should read more books. This is to injustice. Maybe you can think like that. When will I get time? I have online class now. Then I have assignments to do. I have homework to do, projects to do, so many things. Then when will I get time? But you will get time, because to spend time with friends, you don't need some extra time. You make time, right? So you can read. Now, probably one of you may say that I don't have any books at home. Then what to do? Now I can't go to Pan Bazaar, or I can't go to any market to buy books. Or maybe delivery person also will not deliver books now. Or how to get a good books. You may think like that also. But now again, online solution is there. So I will just tell you quickly where you can check some books. For example, there is one website called Storyweaver. Storyweaver, where you will get so many books. Probably I can show as a screen share. Can I do screen share? Yes. Oh, wait. Huh? Can you all see my screen? I don't know. It's Yes, it's visible. It's visible, right? Yes, yes. But it's just doing like this. It's not opening. Okay. So there is one website called Storyweaver, storyweaver.org.in, where you will get thousands of story to read, and in free of cost. No one will charge you any money. And these stories are available in lot of different languages. Sir, is this website free? This website is free. You don't need to pay anything. Okay. So you will get stories in English, Hindi, Assamese, Bangla, Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, all these languages in India. Okay, so and all of the beautiful pictures book, colorful books you can see. So you can go and read those books. Then there is another website by Arvind Gupta. There you will get lots of books around science. So many good books in science. You can check that. Arvind Gupta website. Okay, and they are also free of cost. And there is one website of this publication called Eclabia. Okay, so if you will go to their website in Pitara also, then also you will get so many books for free of cost. All the books are not available in their website, but then there are so many books which are available. So you can read those. Even with NBT also, National Book Trust also, there are so many books which are available free of cost as an e-copy online. So you can read those books. And then there are YouTube channel also, where there are so many stories available. So many beautiful stories in English, in Hindi, they are available. I try to available in Assamese. So many use in YouTube. You can
and so read the books, you can make friends, and we can just wait for better days. So with that hope, I will just conclude my whatever I just wanted to say. So thank you so much. Thank you. শুনি ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগিলে। কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো মোৰো নাই, বাট ময়ো ট্ৰাই কৰিম। আজিৰ পৰা বা কাইলৈৰ পৰা ট্ৰাই কৰিবলৈ পঢ়িব। খুব ভাল লাগিলে। Thank you, sir. We have our last speaker, Anisha Kuwar. I would give some tips on how to be open-minded. Hello everyone. Am I audible? Yes, you are. Okay. Namaskar. Anisha Kaur, counseling psychologist. আৰু মই as a dementia care specialist কাম কৰি আছো organizationত. So today I just want to share some of my tips. Hello. Yes, please continue. Yes. Okay. So I think I have some network issue. That's why am I visible also? Because I have something to show you all. Okay. So today I want to share with you all why art and craft is important, why it is important in our life to be open-minded and to have the positivity in our lives. So already Lisa and Rituparna sir told us about the importance of positivity, how we can keep journals, and also books helps us to have a positive outlook in our life. But I want to share with you all how art and craft helps us. So, who loves to draw? Is there anyone who loves to draw anything? Yes. Ma'am, I like Yes. to draw. Ma'am, I like making Okay. crafts. Ma'am, Okay, I very like good. to draw. I like to Okay, draw. okay, very good. Okay, very good. So, in our initial age, like when we are in school, so drawing is must, right? We have to draw, we have to give exams also. But later on in our lives, drawing is as much as important as other things, okay? Like the writing journal, you can also keep art journals. তোমালোকে art journal ৰাখিব পাৰা. And someone, can you tell me what is journaling or art journal কি হয়? কোনোবাই জানা নেকি? Is what is journal? Research about drawing. To do research. Okay, good, good. Okay, nice. So ঠিক আছে, so you all have some idea that what is journaling, okay? So like Lisa ma'am told us what is journaling and how we can keep our thoughts by writing. So we can, when you have some negative emotions, when we are facing some negative emotions, we can try to shift, that negative emotions into positive one through drawing. So when you are angry, suppose I'm taking an example, when you are angry and you just can't shout at the public place, right? But you are feeling that negative emotions within yourselves and you are suppressing that negative emotions, and you come back home and you are not feeling well about that. So what you can do, you don't if in fact you don't express that in front of your parents or your friends, because that is something very disturbing for us. So what you can do, you can just take a piece of paper, and if you don't know how to draw a face or any kind of object, but you can just doodle, okay? So you know what is doodling? কোনোবাই জানানে doodling কি হয়? Ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. So তোমালোকে you can take a piece of paper, তোমালোকে এখন paper লবা, cheap paper, you can take anything, and then you can just you can draw any lines or you can draw any shapes, and you can also put colors. So colors also impact in our lives. Whatever the colors you are using, it can also release our tensions or release our emotions, stress, and also it feels good.
So মই just example দিব বিচাৰিছো. I want to show you something that these days, because this pandemic time, like we all are facing many emotions, because our works are like in a stagnant positions and we can't go and work. And all students are there who are like have to do online classes, and I know online classes are a bit boring, I guess, because you don't have that visual connections with your teachers and you don't understand properly. So these are the time that this is the most important time you can enhance your skills. Okay, তোমালোকে নিজৰ skills খিনিৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰা. If you like to draw and যদি তোমালোকে draw কৰি ভাল পোৱা, then you can practice your drawings. Okay, sketch কৰি যদি ভাল পোৱা, if you like to sketch, then you can practice your sketch skills, everything. So I want to show you how I keep my art journal. Okay, so these are not big, I'm just maintaining some small art journals. Can you see? Is it visible? I'm sorry, it's No, not it is. visible. I'm sorry for this network issue. কোনোবাই দেখা পাইছা নেকি? Is there someone who can see my video? No, ma'am. No, ma'am, it is not visible. No, ma'am. Ma'am, it's not visible. Ma'am, it is not visible. Oh, okay, then I'm Ma'am, having it some is not serious. visible. Okay, Ma'am, okay. it is not visible. Let me check my network. Okay. Now, is it visible? Ma'am, I can't see. No, ma'am. I'm still not. I'm still not. Okay, fine, no issue. Okay, fine, no issue. Ma'am, I can't So see. you can also. Okay, okay, no issue. Okay, so I'm having some network. Sorry for this inconvenience. I am not being able to show you my art journals. So I'll try to, send you some pictures for that so that you all can see. And also remember one thing, why art is important. It is not like that you should draw a face, proper eyes, proper, human figure or animals or any cartoon characters or anything. But it's not like that. Have you heard about some abstract art? Abstract art Yes, or ma'am. anything, doodling, mental art? Yes, very Yes, good. ma'am. Very good. So I think all people are very intelligent and they know everything, right? So that's very good that you all know about all these things. So you all can practice those art forms. Okay, these will also help you to, release your tensions. And to open your mind, why art and craft is important, because when you create something new by taking inspiration from the nature or any real object, you are also giving your creativity, and you are also giving that platform your creativity to express in front of others, because you are using also you are using observation skills. How you are using observation skills? Because when you take inspirations from an art piece, or when you observe some natural scenery or something like that, you are also observing all those details. Like suppose you are trying to draw a tree, তোমালোকে যদি এজোপা গছ আঁকিবলৈ বিচাৰি আছা, then you are observing that tree. Okay, you are observing all the leaves and shapes and sizes, and that observation skills will also help you to cope with your daily life problems. How it can help you? Because তোমালোকে যেতিয়া নিজৰ লাইফত কিবা এটা প্ৰবলেম ফেচ কৰা, but when you are walking or when you are talking with your friends, observation skill is very much important in our life. That will help you to know other person better and also to introspect within ourselves, because we are very observant about our feelings, we are very observant about our emotions, and also we can observe that other people, that what they are doing and how they are behaving, and this will help you in future life. Because when you will go for any kind of higher education or job field, then you will get to understand that why observation skill is important. And if you were giving your creativity a platform to express, that will also help you to enhance your motor skills, motor skills, because eye hand coordination hoy,
and because of eye-hand coordinations, you are also, you know, trying to you know, improve yourselves. Okay, তোমালোকৰ body movements বোৰ ভাল হয়, eye-hand coordinations ভাল হয়. So here মই বেছি কথা নকওঁ, I will not talk much, but I just wanted to show some of my art journals and art pieces so that you all can get inspired. But due to this network issues, I couldn't show you, so sorry for that. I hope you all get my point why art and craft is important, because coloring also help us to, you know, let our emotions out. So I hope am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So are you all getting my point? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, very good, very good. So Arota important kotha, and one more thing, art and craft, because you are creating something, you are giving your imagination into a real world, you are shifting your imagination into a real world, so it can also boost your self-confidence. Okay, and self-confidence kya boost kar? Because when you are creating something, you are showing it to other people, and that people will encourage you for your art piece, then you will get motivated to create something else and to think better. And Sabha Tumalke, you can compare your first art piece, and if you're practicing daily, then you will be able to draw better, right? So like this way, you can also enhance your creativity, self-confidence, and also it helps us to, you know, develop our language skills, because when you draw something as a child, you also explain your drawing to your parents, to your friends, and that's the way you also enhance your language skills. So okay, so art and craft tumalke try koribo para, you all can try this, and you all can keep your art journals, and kunubai jodi art kori bhal poa, you can also keep it as your career option in future, because art to bahut manuhe career loi ase, and also they are doing excellence in their field, so you all can do that. So these are some of my tips, and yeah, so I hope you all will be able to practice art and craft in your life, and also stay positive, and also open your mind through all your creative ideas, and share you as much as you can with your friends and any platform to show your talents and abilities. So much. I would like to request our special guest, Kavita Bhattacharya, to say some few lines. Ma'am, আপোনাক personally কেতিয়াও লগ পোৱা নাই, but আপোনাৰ কথা মই ইমানেই শুনিছো that no doubt that you are my really a role model. শুনিব সদায় try কৰিম আপোনাৰ নিচিনা. Namaskar. Am I audible? Am I audible? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Namaskar. It was really enlightening and enriching to listen all the speakers. As we all know, positivity is a state of mind. So, how can we remain positive in these tough times? Then our speaker already said that we can pick a good books and read, and books are good friends, and we are all good at something. We can explore our creativity, and that can anything like painting, making some handicrafts, then practicing mime, singing a song, making a video. Out of it, whatever creative activity makes you happy, try to use your free times in a productive way by exploring your creativity. Positivity, সদায় positive mindত থাকিব লাগে, আৰু মই এটা সৰু নিজৰ মানে কথা কব ওলাইছো, বা চবৰে ক্ষেত্ৰত মোৰ ল'ৰা ছোৱালী শিশুবিলাকো ইয়াত আছে, তেওঁলোকক কওঁ, এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিছো। খুব ৰ'দ,
আমি গৈ আছো ৰাস্তাত এখন বিৰাট কামত গৈ আছো আৰু গৈ পেলাই এখন ৰিক্সা লাগে ইমান ৰ'দ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো তথাপি মানে এটা মনত ভাব যে ৰিক্সা লাগে তথাপি ভাবি আছো যে পাম ৰিক্সাখন পাম আৰু যাম আৰু কামটো কৰিম ঠিক তেনেকে গৈ ৰিক্সা পালো গুচি গলো কিন্তু আমি যদি ভাবো ইমান ৰ'দ কেনেকে খোজ কাঢ়িম কেনেকে যাম এই নিগেটিভ যদি এটিটিউডটো আমাৰ মনত আহে আমি তেতিয়া মানে সেই ৰিক্সাখনো নাপাও লাগিব কামটো ভাল নহব গতিকে যদি আমি এই পজিটিভ মাইণ্ডটো লৈ চলো আমি এভৰি মানে ক্ষেত্ৰত আমি সাকসেস হম আৰু আজি এই এনেকুৱা মানে যেটো আমাৰ মহল হৈছে হেতুত আমি সদায় পজিটিভ মাইণ্ডত থাকিব লাগিব গুলশান যে ইতিমধ্যে কৈ গৈছে আৰু গোটেই আগৰ স্পিকাৰে বৰ সুন্দৰকে মানে বৰ্ণনা কৰিছে গতিকে আমি সদায় পজিটিভ মাইণ্ডত থাকিব লাগিব আৰু পজিটিভ হৈ থাকিলে আমি যিকোনো কামত সাকসেস হ'ব পাৰিম আৰু যিকোনো কামত আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু আমাৰ এই দিনত আমি ধুনিয়াকে পাৰ হৈ যাব পাৰিম গতিকে দিনটো আমি ধুনিয়াকে প্ল্যানিং কৰি যদি কৰি লওঁ যে এটোৱে আমাৰ পৰিবেশ আমি এনেকৈ চলিব লাগিব আৰু আমি যদি এনেকে কিছুমান পজিটিভ কাম কৰিব গৈ থাকো দেখিম আমি আমাৰ এইটো সুন্দৰকে পাৰ হৈ গৈ গৈছে আৰু বেয়া দিন সদায় নাথাকে সুন্দৰ দিন আহিব গতিকে হেতুৱে মনত লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব গতিকে I am very happy to be a part of this workshop and thank you so much for your warm words. I would like to request Rumjung Goswami to kindly enlighten us with the words. Namaskar. First of all, I thank Gulshanji and Minanka for organizing such a beautiful event today under the Gandhi Committee and Nirbak. I also thank for inviting me and I am grateful. আজি এই অনুষ্ঠানটোত আজি এই ইভেন্টটোত যিসকলে এতিয়ালৈকে পজিটিভিটিৰ ওপৰত আজি সাবজেক্টটোৱে খুব ধুনীয়া পজিটিভিটিৰ ওপৰত ইমান ধুনীয়াকে ক'লে তাৰ মাজতে নিগেটিভিটিৰ ওপৰতো এটা ইমান ধুনীয়াকে কৈছে প্ৰথম মই গুলশানজিৰ যিখিনি কৈছে তাৰ কথা তিনটা কথাৰ ওপৰত যেনেকে ক'লে যে পজিটিভিটি আৰু পাৰফৰমেন্স আৰু পাংচুৱেলিটি এই তিনটাৰ কথা বৰ সুন্দৰকৈ ক'লে মই আশা কৰিছো আমাৰ যিখিনি শিশু ইয়াত আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত যেনেকে সকলো ঘৰতে আছে আৰু ঘৰত থাকিয়ে আজি তেওঁলোকে যিখিনি গুলশানজিয়ে যিখিনি কথা কৈছে এই তিনটা বস্তুৰ ওপৰত আশা কৰিছো তেওঁলোকে এই তিনিটা ঘৰত থাকিয়ে কেনেকৈ সময় পাৰ কৰিব হয়তো নিজে গমেই নাপাব তাৰমানে পজিটিভিটিটো লৈ থাকিলে এই বেয়া সময় সেই ভাৱটোৱে হয়তো তেওঁলোকে গমেই নাপাব আৰু বাকি যিসকলে আজি ইয়াত লিজা ঋতুপৰ্ণ আনিশা তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকে গোটেই পজিটিভিটিৰ ওপৰত বেলেগ কেনেকৈ মানে কিতাপৰ পৰা কিতাপ এখন বন্ধু কিতাপ হল এজন মানে নিজৰ বন্ধুৰ এজনে যিখিনি কৰিব পাৰে কিতাপ এখন লৈ কেনেকৈ সময় যাব তেওঁলোকে গমেই নাপাব আৰু লিজাই ইমান ধুনীয়াকে কৈছে আনিশা ইমান ধুনীয়াকে কৈছে কেনেকৈ মানে পজিটিভলি প্ৰতিটো যে নিগেটিভিটি নাথাকিলেতো গম নাপাব ন পজিটিভিটিটো যেনেকৈ আন্ধাৰটো নাথাকিলে আমি পোহৰটো গম পাম জানো ৰাতিটো আমি থাকাৰ কাৰণেহে ৰাতিপুৱাটো ৰ'দ ওলালে সূৰ্য ওলালে পোহৰ হ'ল এনেকুৱা এটা গম পাওঁ কিন্তু ৰাতিটোতো আমি অন্ধকাৰ বুলি আমিতো বেয়া মনেৰে নাথাকো আমি ইমান ধুনীয়া ৰাতি আহিলেও ফূৰ্তি যে বা শুব পালো শুইছো সেইটোতো খোৱাটো আমাৰ এটা টনিক ন খোৱাটোৰ কাৰণে আমি আকৌ ৰাতিপুৱা নতুন উদ্যমেৰে কাম কৰিলো গতিকে আমি আন্ধাৰটো থাকিলে যেনেকে পোহৰটো ভাল লাগে আন্ধাৰটো ভাল হিচাপে যদি আমি লওঁ যে আমি যে আন্ধাৰত ৰাতিটো আন্ধাৰতে আমি শুইছো ন আন্ধাৰ গোটেই পৃথিৱী কিন্তু আমি শুইছো সেই খোৱাৰ পৰা আমি কিমান এটা পালো তাৰমানে পজিটিভিটিটো এইটো পালো গতিকে
আনিছাইও ইমান ধুনীয়াকে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ওপৰত কৈছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰাকে বহুত কেনেকুৱা প্ৰতিভা আছে গমেই নাপায়। কিন্তু এতিয়া ঘৰত থাকি সেইদিনাখন মই কিবা এটা মেছেজত মানে এটা কথা পালো যে হয় আমি এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত যে সব ঘৰত আছো, তেতিয়াহে গম পাইছো যে গেছৰ বাৰ্ণাৰটো ফুটা কেইটা, এইটো বস্তু কিমান, আমাৰ ঘৰতনো লাইট ফেন কেইখন আছে, লাইট কেইটা আছে, কিছুমান বস্তু সূক্ষ্ম বস্তু আমি এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত ঘৰতে থাকি ঘৰৰ গোটেই বস্তুটোৱে আমি জানি উঠিব পাৰিছো। গতিকে আজি খুবেই ভাল লাগিল আৰু খুব আশা কৰিছো প্ৰতিটিয়ে মই শেষত কওঁ ইমান ধুনীয়াকে আগবঢ়াই নিছে আৰু মীনাংকই এইখিনি ইমান ধুনীয়াকে মানে হেৰি গোটেইখিনি আগবঢ়াবলৈ এইখিনি সকলোকে উৎসাহ দিবলৈ এইখিনি কাম কৰিলে। মই সকলোলৈকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছো মোক ইয়াত আহি এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণেও। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। সকলোৱে সুখত থাকক। Thank you. We have one more speaker, Mr. Minanko Deka, the founder of Nilbur. Unfortunately, he is having terrible network issue, so he couldn't join. So this is very unfortunate. Now the session is open for question answers. If someone have any question, can unmute themselves and ask. Karobar jodi kiba question ase, teloke nisake unmute kori hudiba pare. No conclusion. Hello, মই কথা এটা ক'ব বিচাৰো। Hello. Am I audible? Yeah. মোৰ কথাটো হৈছে ঋতুপৰ্ণা ছাৰলে। ছাৰ, মই গম পোৱা নাছিলো আজি আপুনিও আহিব বুলি। এতিয়া মীনাংকদাক সুধোতে গম পালো। আপোনাৰ পোষ্ট এটা মোৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছিল ফেচবুকত। এবছৰ হ'ল নেকি, আপুনি লাইব্ৰেৰী এটা খুলিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মোৰ সেইটো সপোন এটা হৈ আছে যে মোৰ নিজৰ মই তিনচুকীয়াৰ হেৰি ডুমডুমা দাইচাজান টি ষ্টেটৰ পৰা বিলং কৰো। তাতে বাগান আছে আৰু ওচৰ পাজৰ গাঁও এখন আছে। তো মোৰ সেইটো বহুত মন আছে, মোৰ সপোন আছে যে তাতে লাইব্ৰেৰী এটা খোলো আমাৰ সকলো হেৰি গাঁৱৰ ওচৰ পাজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। আমাৰ হেৰি যোন লোক আমাক হেল্প কৰে বাগানত, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মই এইটো সপোন আপুনি মোক ইনস্পায়াৰ কৰিলে আৰু সেইটো কাৰণে আজি I just want to thank you for that. Thank you. আজি ঋতুপৰ্ণা দা আছে কাৰণে মই সুবিধাটো লৈ ললো ক'বলৈ। So sweet of ma'am. আশা কৰো আপোনাৰ সপোনবোৰ যাতে পুৰা হওক। কিবা সুধিবলগীয়া আছে নেকি বাৰু? কিবাকো লাগে নিশ্চয়, ইমান ধুনীয়া সেশন গৈছে, কাৰোবাৰতো কিবা কুৱেশ্যন থাকিব। Yes, ma'am. আছে যদি সুধিব পাৰা। অনুষ্কা? Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask you that this time we are all having online classes, and rather than that, we some like hobbies and we do a type of hobby like we can study a book, and in this time, can you prefer some book that we can study? I would like to answer this question if I can. Sure. Okay. So Anushka, a very good question, and it will also help others. So the books that I follow, okay, this is a book that I love to read whenever I'm not feeling good. The Monk Who Sold His Ferrari. Okay.
Another book is here. It's too far. Another book I follow is The Power of Subconscious Mind. Also, for girls, there is a book called Chicken Soup for Girls. I have the book, but it's in the other room. So you can follow that book. Another book, I think Rituparna sir will be the good person, but I want to also share my experiences with book. The Secret. Okay, The Secret is a book that will let you know about law of attraction, the power of intention, the power of your mind. So this time, this lockdown is a very good time to invest in your mind, play with your mind, train your mind, you know, make your mind, control your mind. So it's a very good period to, sit, meditate, and practice these things. So you can bring the power of subconscious mind, the book Secret. These two books will really help. Like it has helped me in a lot of ways. And also Chicken Soup. This book has literally taught me that I'm not the only one, facing the difficulties which I had when I was in, class 3, 4, 5, 6. This book literally taught me that there are other people out there in the world. They're facing the same problem. I at There was a period when I thought that why me, God, why me? Moi kele, মোৰ লগতে কেলে এনেকুৱা হৈছে? When I found that book, I bought it from some library, and I went through the book. It gave me so much, like hope that the first thing, I'm not the only one. Second, this is not the end of my life. Third, এনেকুৱা হৈ থকাৰ পিছতো বহুতে নহয়, সদায় আমি কিবা এটা ডাঙৰ আগত কৰিব পাৰো. We can take the obstacles of our journey and build the road for us. So সেইটো বস্তু এটা ইনস্পিৰেশ্যন পালো এই বুকখনৰ কাৰণে. চিকেন চুপ মোৰ ফেভৰেট বুক হয়, এতিয়াও পঢ়ো. সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষকে, বাট পঢ়িব পাৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে বিশেষকে বহুত হেল্পফুল হয়. Thank you. लीजा जी ने जो बताया अभी, एक वो भी तरीका है, और इस पर मैं भी एक कुछ बात अपना शेयर करूंगा. जो अनुष्का ने सवाल पूछा कि हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, मैं बोल सकता हूँ? Sir, you can. Yes, sir, we are listening. जी, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो खास करके उनके लिए है जो अभी छोटे हैं. छोटे मतलब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनकी अभी क्लासेस या अभी स्टडी चल रही है, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ऐसा मैं मानता हूँ कि सभी लोगों ने एक सोच के रखा होता है कि मुझे क्या बनना है, अपना करियर में मुझे क्या करना है. दे हैव डिसाइडेड, कुछ ना कुछ हद तक सोच रखा होता है अभी तक. फ्यूचर में जाकर के वो बदल सकता है, लेकिन अभी हमने कुछ डिसाइड किया हुआ है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि बिजनेसमैन बनना है, जो भी बनना है. इसके पीछे एक आइडिया ये काम करता है, यदि आप अभी छोटे हैं और आपके पास टाइम है पढ़ने का, तो आपको वो किताबें पढ़नी चाहिए या उनकी बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़नी चाहिए जो आपको बनना है. आप जो बनने, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, तो आप पहले आदमी नहीं है जो साइंटिस्ट बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या पुलिस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे. आपके पहले बहुत सारे लोग बन चुके हैं, लेकिन वो कैसे बने ये आपको पढ़ना चाहिए. उनकी जो जर्नी है साइंटिस्ट बनने की, जैसे मान लीजिए डॉक्टर अब्दुल कलाम, यदि हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो बहुत हाई लेवल की इंस्पिरेशन हमको मिलेगी उनको पढ़ने के बाद. तो मेरा सजेशन है कि जो हम बनना चाहते हैं उस फील्ड में जो लोग पहले आ चुके हैं, जो बन चुके हैं, जो काम वो लोग कर चुके हैं, उसको हमें जानना चाहिए, ताकि हम एक तो उनसे सीख सकें, उनकी लर्निंग्स को हम पहले ही सीख जाएं. दूसरा, जितना काम वो कर चुके हैं उसके आगे क्या काम करना बाकी है, स्कोप क्या है उस काम में, वो भी हम जान जाते हैं. तो ये दो काम हमको उनसे सीखने को मिलते हैं जो हमसे पहले लोग आकर कर चुके हैं.
और जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़े बड़े लोगों को ही सुनना है या पढ़ना चाहिए। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस फील्ड में अच्छा कर रहे होंगे, उनको भी जानना चाहिए। हो सकता है आपको वो किताबों में ना मिले, लेकिन आमने सामने बैठ करके सीखने को मिले। उनके पास भी टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि हम उनके एक्सपीरियंस से सीख सकें। तो ऐसी किताबें पढ़िए जो लोग, जिनको जिस फील्ड में हमें अपना करियर बनाना है, उसमें जो लोग पहले कुछ कर चुके हैं उनका लिखा हुआ हम पढ़ें। बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। इस तरह की किताबें भी हमें छोटी एज में पढ़ लेनी चाहिए, ताकि बड़े जब हमारी उम्र आए वो काम करने की, तो वो हम काम कर सके। ऐसा ना हो कि हम जब बड़े हो गए, हमें जब परफॉर्म करना है तो हम केवल पढ़ रहे हैं। हमें वो किताबें पहले ही पढ़ लेनी चाहिए ताकि हम जब परफॉर्म करने लेवल पर आए तो हम काम कर सकें। मुझे लगता है मेरी बात पहुंच गई होगी सब तक। Yes, sir. Thank you, sir. All questions? Ma'am, I would like to ask Lisa, ma'am. Lisa, ma'am. Yes, Lisa or Ma'am, Anisha? I'm Lisa. Okay, okay. Lisa, ma'am. Ma'am, how to start journaling? Yeah, good question. Okay. I'll take my journals out. So, what I do is that I sit down, I start again, I recall my entire day. I go back from the day I woke up. And what I do, I start writing that I, Lisa Hajarika, is very grateful to the universe or to God or to any energy for waking me up at time. And the sunshine was very beautiful today. It made me feel fresh. Uh, and I'm really grateful for the beautiful, like healthy breakfast I had. So what you can do first, count your blessings. কি কি বস্তু ভাল হল, क्या क्या चीजें अच्छी हुई है पूरे दिन में. Okay, go back. जब से आंख खुली तब से स्टार्ट करो, क्या क्या अच्छा हुआ. एंड गो डीप. डीप मतलब छोटी छोटी बातें, कि आज तुमको मम्मी ने कुछ अच्छा बना के खिला दिया, अ, तुम्हारा मन बहुत मतलब खुश हो गया. आज तुम्हें अपनी अपनी मैथ्स प्रॉब्लम का आंसर तुमको आसानी से मिल गया. बी ग्रेटफुल अबाउट दैट. लाइक wow, I'm so grateful to myself for being able to do this math problem so easily and in a correct way. Okay, so always find किसके साथ ग्रेटफुल होना है. खुद के बारे में भी हो सकता है. आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स माई सेल्फ, आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स माई मॉम, आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स. अगर कोई बच्चा तुमको देख के स्माइल कर दिया एंड यू फेल्ट गुड अबाउट इट, ओ बेबी ने मुझे देख के स्माइल किया, इट मेड यू फील स्पेशल सम वे, थोड़ा सा बट सम वे, तो वो भी लिखो. Write it down. I'm so grateful. I saw a baby. आज मैंने एक बेबी देखा and he smiled. He or she Sorry smiled to at me. interrupt. It made me feel so good. Hello? Sorry to interrupt. Yeah. Is manifestation a part of a journal writing? Yes, 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 yes. This is the copy which I use to manifest. And manifestation is a very beautiful process to bring things to your life. I have manifested many things, my subject, without knowing about manifestation. I manifested my subject. Later, when I went through the course about power of intention, a law of attraction, I got to know that what I got from out of nowhere, it was, I thought it's a miracle, but it was the power of my subconscious mind, the power of universe, the power of intention that brought that thing to me. So manifestation, to manifest, journaling is a very beautiful process. And when you manifest, try to write things that you want in a present form. For example, suppose
Okay, last month I was COVID positive. Okay, and trust me, I won't say that मैं बहुत positive थी because first 3 days was terrible for me, and at there was a point I thought that I won't make it tomorrow. It was that bad. And obviously, my Delhi aso, I'm in Delhi right now, and the situation was so terrible around me. I could hear ambulances going in and out. So it was a very, terrible situation. Then I realized ये चीज जो मैं अपने मन में ले रही हूँ, द नेगेटिविटी, द थिंग्स आई एम थिंकिंग दैट मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मैनिफेस्टिंग समथिंग दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड फॉर माई लाइफ. I started telling myself that I trust the healing capabilities of my body. So I'm telling my body that I trust you and now you do the work, you heal me. तुम मुझे ठीक करो. अभी ऐसे लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉडी कैसे खुद को ठीक कर सकता है. Don't underestimate your body. Your body has miracles, and अगर तुम उसको गाइड करोगे and you will order it, it will do your work. I started, transforming my thoughts. I started uh, using positive affirmations that I heal my body. I know my body is healing. ऐसे मैंने नहीं लिखा कि my body will heal. फ्यूचर में मैंने नहीं सोचा, मैं प्रेजेंट में सोच रही थी that I know my body is healing. I trust the capacity of my body to heal. I trust my mind to heal my body. एंड एट द सेम टाइम उस टाइम पे मैंने एक चीज बहुत नोटिस की खुद के बारे में, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. सो मेरी थोड़ी दिन पहले कजिन हुई थी एंड आई एम सो अटैच टू हर. सो I had this in my mind. I have to make through this COVID period. I have to get tested negative soon so that I can see her again. I can take her again. I cannot let this happen to myself. तो वो जो sense of belongingness था मेरे अंदर कि I am a sister to someone, I am a daughter to someone, and there are people waiting for me. My friends are waiting for me. I have to fight this. That sense of belongingness gave me the motivation to fight, gave my body the motivation to fight, and gave me the power to overcome COVID. I'm not saying that people who have lost a battle in COVID were weak. There were other things. There were other factors. मेरा तबीयत ज़्यादा खराब नहीं हुआ. It was, yes, oximeter was reflecting 80 and the hospitals were not available. एक था उसमें, but then, yeah, many factors that helped me. But yes, people who have lost, वो लोग weak नहीं थे. They fought till their end, and they are warriors again. So I hope I have answered your both of your questions, Bhairavi and Pratiti. Sure, Ma'am. thank you. Thank you, ma'am. Cover questions. নিয়মমুখিত questions थे থাকিব লাগে.